talk about the education sector that has taken a hit during the pandemic. With the new normal entailing hybrid learning, the sector has its own curated wish list ahead of the union budget. All key stakeholders, from students to parents and schools, also now are hoping for big, bold steps from the union finance minister. My colleague Alok Singh gets you the voices that matter in this special budget report. From schools to homes, from blackboards to laptops and phones, and from learning with friends to seeing them only in virtual classrooms. Education for children in the pandemic has seen a 360-degree turn. With COVID cases ebbing, several states have chosen to resume physical classes. However, most of the schools are still opting for hybrid mode of learning, which means online classes are here to stay, at least for now. So is the need of a robust infra to make it accessible for all. Quality school education has always been a costly affair for the parents. COVID pandemic has made it even more difficult. Amid COVID-induced job losses, pay cuts and stress on family incomes, parents are feeling the pinch even more while paying the very high school fees, especially with no physical classes taking place. हमारा जो है बिजनेस ठप हो गया, नौकरियां चली गई लोगों की और बहुत से लोग बेरोजगार भी हैं। तो उस इन बिटवीन सरकार की तरफ से या स्कूलों की तरफ से कोई फीस में कोई हमें कंसेशन नहीं मिला कि हम फीस कम भरें या नहीं। अगर हम फीस नहीं भर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंड आ रहा है कि आपके बच्चों को निकाल दिया जाएगा, या जो ऑनलाइन क्लासेस हम दे रहे हैं बच्चों को, ऑनलाइन बच्चे क्लासेस ले रहे हैं तो उन क्लासेस में बच्चों को बैठने नहीं दिया जाएगा। इस तरीके के मैसेज स्कूल की तरफ से आते हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब इतना ये कोविड का ऐसा हमारा 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं तो पेरेंट्स कहाँ से फीस लेके आए? मरता जो है वो है मध्यम वर्गीय, तो वो बेचारे कहाँ से लाएंगे? जो लेडीज जॉब कर रही थी प्राइवेटली, उनको जॉब नहीं है, बच्चों की फीसेस कहाँ से देंगी? और जो अकेले पेरेंट्स हैं वो कहाँ से फीस दे पाएंगे? मेरा बेटा जो है 12th किया है उसने, लेकिन पैसों की वजह से मैंने उसको बिठा लिया क्योंकि इतना पैसा ही नहीं है जो पढ़ा पाऊँ मैं आगे बच्चों को अपने, क्योंकि रसोई से फुर्सत नहीं मिलती। तेल इतना महंगा है सर, राशन इतना महंगा है, पहले खर्च चलाए या बच्चों को पढ़ाए। The pandemic and the resultant shift to online learning has put the spotlight back on the digital divide prevailing in the country. With growing dependence on gadgets like laptops and phones, education has become a privilege not everyone can afford. तो हमारा यही है कि आप जो बजट लेकर आ रहे हैं, जितना भी हो सके ये जो डिजिटल डिवाइड का जो गैप आया हुआ है उसको फिल करने के लिए सस्ते दामों पे आप लैपटॉप या आप टैब की कोई फैसिलिटी देते हैं जिसमें वो बच्चा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, या इनफैक्ट मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जो मिडिल क्लास है उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है अपने घरेलू बजट से निकाल के उन बच्चों को टैब या मोबाइल देना। तो मैं ये कहूँगी बहुत बजट वाले रेट में बहुत कम प्राइजेस में लैपटॉप या प्री लोडेड जिसको बोलते हैं ऐसी फैसिलिटी होती है सॉफ्टवेयर की, आप अगर ऐसे लेकर आते हैं जो बहुत अच्छा रहेगा, जो हम इस गैप को फिल कर सकें। The schools too have their own list of grievances. While several of them got shut during the pandemic because of financial constraints, with many teachers rendered jobless. On the other hand, numerous small private schools are unable to pay their staff. Our teachers have also proved to be COVID warriors, and they have also been taking care of students online, offline, as and when it was required, and also they have helped in their neighborhood by their social service programs, and they do deserve the recognition which they are worthy of. And therefore I'll request the central government to think about them, and there should be some social protection corpus be planned for these staff members, including teachers and others of these private recognized schools. Union Budget 2022 is expected to be focused on
the education policy, the new education policy, and also the learning loss due to COVID-19. Everybody who is connected to this sector, they are all affected, and they are very much hopeful from this union budget. We have to see that what announcement the government will make. But in last year, around 93,000 crores were allocated for the education sector. So this year, how much money will be allocated and what new things will be announced by the government so that the morale of this industry could be boosted. With video journalist Satinder Jha, I am Alok for Mirror Now.